थोड़ा अंडर द वेदर। Yeah, I think we're live. Yeah. yeah. Without Himanshu, so Is Himanshu still with us? no, Oh, he's bounced. Nice one. no, he'll Good be one, back. good one. And he's trying to come back. But Himanshu, can you like shut your audio at least meanwhile? क्योंकि तेरे audio कुछ तो गुड़ 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 ऐसा कुछ तो sound आ रहा है. तो okay. Let me just share this on our group. Better? नहीं यार, it's not better. I can't even see you guys. Yeah. Fuck my life. अच्छा, how about you stay only on audio? We'll hear your voice. हाँ, Okay. मतलब मैं अभी भी ऐसे ठीक है? हाँ, ऐसे अभी ठीक है. मैं कर रहा हूँ. ठीक है, चलो जब तक फिर I can see you now. जब तक तेरा वीडियो ऑन नहीं होता ना तब तक ठीक था. तेरा हाँ, ऑडियो ठीक आ रहा है, वीडियो फकौल आ रहा है. अब ठीक है. बेटर. हाँ, I mean reasonably. Anyway, ठीक है. we can. हाँ, this is good. We can start off on this chill stream, which was just to let all three of you all know we haven't promoted this one much because this was not an ideal time for us to do a stream. एक तो पहली बात हम लोग बहुत टाइम से हम लोग आए नहीं है चैनल पे because हम लोग सब busy थे, कुछ ना कुछ चालू था लाइफ में. So 6 people watching already though, which is insane because we haven't really actually group पर तो बताया, group से तो आ ही जाएंगे 6 लोग. तो yeah, so Himanshu has peer pressured us into doing this stream, and he has also being Himanshu, he has sacrificed his internet to the government of Assam, and he is now unavailable on video. We can hear his voice in spurts whenever his MyGeo voucher will allow him to. Bharat is sick. I have been traveling for the past 24 hours, so this is imagine a chill stream, but like just take that chill to like an extreme extent where this is like yeah, you're sitting with your friends, but not even friends that you know, ऐसे कोई ऐसे फ्रेंड नहीं है जिसको सालों से मिले नहीं है, कुछ एक्साइटिंग बात होगी. इट्स लाइक फ्रेंड जिसको तुम कल मिले हो, सारी बात कल हो चुकी है, आज कल ही पता नहीं क्यों मिल रहे हो, ऐसे बैठे हो. तो दिस इज लाइक दैट, एंड विद दैट 2 people have left. So so nice one. Harkirat Singh has asked, how are you guys doing? Harkirat are not doing very well, man, to be honest. This content पे तुम लोग मतलब ऐसे सब भारी सवाल पूछोगे तो फिर हम लोग क्या जवाब देंगे तुम लोग. ये हम कोई बड़े चैनल तो है नहीं जो लाइफ के सॉल्यूशन देते हैं आपको, आप सबको. सो आदित्य तब से 2 बार तूने बोल दिया बड़े चैनल. बड़े कितना चैनल कहाँ लेगा यार? मैंने एक ही खुद बार का. बोला बड़े चैनल. देखो हम नहीं अटके 97.2 के पे. तू प्राइवेट करवाएगा यार ये स्ट्रीम. फक भाई, हम लोग 1.36 पर अटके हुए हैं, ठीक है. तो आई डोंट थिंक वी हैव एनी देख, हम लोग उनको दान भी दे देंगे ना अपने सब्सक्राइबर्स, तो भी उनके 100 के नहीं हो. oof competition for Shwetab and beer biceps. Do you think we should do this? Do you think we should? I want to ask because जो भी 8 लोग हैं, you guys are like I believe our core audience. So like, do you think we should start beefing एकदम randomly, like hardcore beef? Because we can, as Bharat has just demonstrated, randomly. But yeah, so if we do that, हमारे भी subscriber थोड़े मतलब 1-2 तो बढ़ जाएंगे. क्या लगता है भरत? You've been a content manager for a long time, dude. Tell us, what is your view? नहीं, In the मेरा whole- my view of content or whatever isn't. I don't think negativity should be promoted. I'm a very positive-minded person. I don't think we should get views or anything, any traction on hatred.
I think we Because- should not. I think our 1.36 people also, 1,000 people also should unsubscribe. Actually, that is that is we want 0 subscriber channel where where we get thousands of views on every video, but nobody subscribes because you should never subscribe to anybody except for discontent versus प्रखर. Discontent versus प्रखर तो हम लोग बहुत टाइम से कर रहे हैं यार. हम लोग तो कब से उसको डिस करे जा रहे हैं. किसी ने उठाया नहीं, किसी ने क्लिप बना के हम लोग तो दे जा रहे थे कंटेंट. तुम लोग साले क्लिप नहीं बना रहे हो उसके, तो हम लोग क्या करें. 13 लोग हैं वैसे भी इधर, कौन बनाया क्लिप उनमें से. तो मेरे को कभी कभी ऐसा वो होता था कि यार अपने अपने जो भी हम लोग ने, क्योंकि हमने कभी भी ऐसा नहीं किया ना कि हमने, अगर हम लोग प्रखर के बारे में बात करें तो हमने प्रखर का फोटो डाल दिया ऐसे थंबनेल पे, है ना. तो वी डिडंट डू दैट शिट. हम लोग बात कर रहे हैं कि वो कियारोस्तामी की और अंदर कहीं पर श्वेता प्रखर वो सब हो रहा है. तो इट्स नॉट लाइक, तो आई मीन मेरे को कभी कभी ऐसा टेम्प्ट हुआ है कि खुद ही ऐसा बना देने के लिए क्लिप बना के कि ये क्या बोल दिया इस चैनल ने, इसकी हिम्मत कैसे हुई, लो सब्सक्राइबर चैनल देखो क्लाउड चेज कर रहे हैं. मेरे को मन किया ऐसा, तो कहीं से तो थोड़ा क्लाउड आता, बट आई गेस नॉट. मुझे तो लगता है हाँ हम लोग कंटेंट सिर्फ उन लोगों के लिए बना रहे हैं जो 10 साल बाद जब हम थोड़े बहुत होपफुली फेमस हो जाएंगे तब सुनेंगे. हाँ Like there is only हाँ. archival value to all of this. There is no There is- current, there is no present value this to. this reminds me of that Appreciation. joke ना, that Manu का very famous joke, जो लोग पास प्रेजेंट में नॉस्टैल्जिया में जी रहे होते हैं, यही तो बातें याद आएंगी टाइप्स. हाँ यही है. मुझे लग रहा है कि ये हमारा पॉडकास्ट इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ 10 साल बाद कोई किसी को पता लगे इसके बारे में, फिर ये फेमस हो जाएगा, फिर लोग बोलेंगे यार इसको कोई क्यों नहीं सुनता था पहले. तो फिर ये वैसा टाइप का शो है हमारा. तो और वो ऑडियो क्वालिटी और टेक्निकल क्वालिटी तो देख ही रहे हैं आप, ऐसी है. तो क्या ही बोले. हिमांशु तेरा कुछ भी सुनाई नहीं दिया बाय द वे. तेरा सब कुछ ऊपर से गया, सब तू ब्रेक हो टेक्स्ट गया. पे डाल दे, मैं बोल तो दूंगा. टेक्स्ट पे डाल, हम लोग तेरे लिए बोलते हैं. You can be our Stephen Hawking. You can be in-house Stephen Hawking for discontent. Yeah, anyway, he's left. He's left only. Chalo. Hey, let's talk about. अरे यार, let's talk about movies. Come on. Let's talk about Movies, yeah, or shows or whatever you watched. or done. yes. What did you watch though? I You told watched you, I just PS1, na? No, I haven't. I haven't watched PS1. Oh, I watched wanted to, but PS1. It's and you guys haven't you guys discussed it before? No? So we mentioned it briefly on the Bourgeoisie podcast, which was like just like a little bit. We just touched upon. By the way, कोई Bourgeoisie देख रहा था थोड़ा, प्लीज उधर भी जाके, नहीं देख रहा है तो प्लीज जाके देख लो. पर मुझे तो ठीक लगी मूवी. मतलब मुझे हिस्ट्री वाला पार्ट अच्छा लगा. मुझे आई फाउंड द होल पॉलिटिकिंग एंड ऑल दैट स्टफ वेरी इंटरेस्टिंग. द प्लॉट वाज इंटरेस्टिंग. The acting a lot, some of the acting was good, some of the acting was very average. Some of the, but the saddest part for me was that, you know, like the action scenes were just atrocious in my opinion. Like the VFX was really bad. पर चल ठीक है, अगर मैं VFX को उतना, यार मेरे को एक बात समझ नहीं आती. PS1 में एक शॉट है भारत, एक वुडन दीवार है, ठीक है, और वो दीवार के ऊपर एक लॉग है, एंड दिस इन्वेडिंग आर्मी is coming and trying to break through the whatever the fort or the castle's wall, है ना. वो जब भी वो स्टॉप, जैसे वो ऐसा siege weapons के जब भी उसको ऐसा ठोक रहे हैं ना वो दरवाजे को, या जिसको भी, वो VFX है, वो ग्राफिक्स में किया हुआ है. एंड मेरा ये सवाल है कि क्यों, मतलब is it how expensive is it to arrange a large wooden door for a director like Mani Ratnam, who I am assuming would have quite a bit of money to his this thing. Himanshu is here with this face. Yes, Oh, he has yeah, a much way better. Yeah. This is my changing room. This is your changing room. Oh, this is the green room, na, in your studio. नहीं, this is the green room. Yeah. Context दे दे भाई लोगों को कि हाँ, तेरा थोड़ा तो studio है. बता दे, वरना ऐसा लगेगा कुछ और टाइप का स्ट्रीम चलने वाला है इधर. पर Lol. अरे नहीं, this is my studio space. Previously I was like, मेरा जो editing space है वहाँ पे Wi-Fi है. I was trying to get set up there, but नहीं हो पाया. तो I came to this place. This is my changing room, green room, makeup room. So here यहाँ पे मतलब वो है, window है. तो फिर और एक false wall है, उसमें वीडियो कैमरा है, और उधर दूसरी साइड होटल स्वीट है. what the fuck? I'm kidding. No. नहीं भाई, पुलिस आ जाएगी यार. हाँ, तो भरत तू फालतू का बॉम्बे में बैठ के ना उसके लिए कार्ड मत बना उधर. थोड़ा बहुत काम में आ रहा है अभी.
तो थोड़ा No, but genuinely, if you guys are in Guwahati for some reason and you want a photo shoot, then please visit. What is it? Popco Studios, right? Popco Actually, studio. go to Instagram and just fucking follow his page. Yeah. He normally doesn't drink while on the job, but I'm not drinking beer. This is okay. like I thought I was while I'm promoting your thing for to get more work to बैठ के दारू पी रहा ऑफिस में, which is good. हाँ, पर क्या पी रहा है तू? energy drink. I needed some sort of thing because What is अभी this off-brand Red Bull that you're drinking? Yellow color Predator energy. करके नाम है, Predator. This is like Monster का उन्होंने basically rip off किया ना. हाँ, वही टेस्ट है, Red Bull ही है basically. यार मेरे को एक अच्छा, कमेंट बहुत सही लगा है, which is हरकीरत सिंह ने बोला है, भाई मीडिया रंबल, with मीडिया रंबल is न्यूज़ लॉन्ड्रीज annual sort of event पे न्यूज़, भाई मीडिया रंबल पे जाके मैंने बोर्डजुआजी का बताया, एक ऑफुल एंड ऑसम पे तो आ जाओ आदित्य. पहली बात तो एक तो थैंक यू. ओके, तूने बताया मतलब किधर बताया, किसको बताया, डिड यू लाइक मेंशन इट और डिड यू, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर रिकमेंडिंग इट एट ऑल, एंड सेकंड ऑफ ऑल ऑफुल एंड ऑसम पे आना मेरा डिसीजन थोड़ी ना है भाई, मैं थोड़ी ना उधर, मतलब मैं कौन हूँ, तो फिर वो वाला एस्पेक्ट रहता है. तो अगर कोई सुन रहा होगा तो फिर मेरे को बुला लो, मैं तो आ जाऊंगा, मैं तो खाली बैठा हूँ, मैं तो 11:30 बजे बैठ के इधर, एक्चुअली मेरे लिए इधर 1 बज रहे ऑलमोस्ट, आई एम नॉट इन इंडिया राइट नाउ, सो मेरे लिए थोड़ा ये सीन है, तो मैं तो कहीं पर भी पहुंच जाऊंगा कुछ भी करने के लिए, तो हाँ कोई बुलाएगा तो आ जाऊंगा. एनीवे हाँ हिमांशु. Sorry, अभी एक सेकंड. Let's not. मुझे PS1 की बात खत्म करनी थी. Correct. Himanshu, you also watched it, right? I'm the Yeah. only one who's not. So what is your view? Because Aditya mentioned what you must have heard, right? Yeah, the VFX ना वो तो था, VFX का इशू था, and overall थोड़ा slow लगा मुझे. I felt How like do you it was find the acting? Sorry to cut you, but how do you find the acting? I want to know. some of them are fine, some of them are not so fine. Okay, मतलब there's nothing to complain. If you don't understand the language very well, you can't really pinpoint problems, you know. So I तो saw it with the dub, so not dub, the sub. तो मुझे तो ठीक ही लगा इतना. I mean, felt very manufactured, like a Marvel movie only. It felt like it was like a Bahubali or something. Bahubali के world का But ही है you ये. know what's really sad? Ki, I don't know how many of y'all have have seen Iruvar, which is Oh also yeah. a Mani Ratnam film, which is a damn good film. और इरुवर में ना जो एक याद है, मैं वो गाना गाने की कोशिश नहीं करूंगा, बट इट्स लाइक अ वेरी बेस हैवी एक्शन सॉन्ग, व्हिच इज एमजीआर का जो कैरेक्टर है, ही इज लाइक इन दिस मूवी व्हिच इज लाइक अ पीरियड मूवी, एंड इट्स मणिरत्नम इज बेसिकली शॉट की एक मूवी शूट हो रही है मूवी के अंदर, एंड वो पूरा एक सॉन्ग सीक्वेंस है, व्हिच इज अ वेरी वेल डायरेक्टेड सॉन्ग सीक्वेंस, इट्स अ पीरियड सॉर्ट ऑफ दिस थिंग, एंड आई Yeah. थॉट कि उसमें जो विजुअल लैंग्वेज और जो डिजाइन था, that was so good, and I was sort of half expecting that kind of finesse to come into PS1, because I would imagine that he would use, ठीक है वो खाली एक म्यूजिक वीडियो को आप वो कंसिडर कर सकते हो, बट स्टिल इट वाज अ वेरी, आई थॉट इट वाज वन ऑफ द बेस्ट इरुवर का वो वाला जो सॉन्ग, इफ समवन कैन नेम द सॉन्ग which I'm talking about, I don't recall right now, that is one of the best short song sequences I've seen in whatever I've seen little of Indian cinema, because उसने बहुत ही सही shoot किया. It's a black and white sequence, if you guys remember. हाँ, I do remember, and I remember the whole film has a very distinct style, which is now, I mean, वो संतोष सिवन की style हो गई है basically, which is very aesthetic shots. If you see, and that was a period where he used to frame like that and light like that, like जैसे दिल से का भी same visual language है, same frames है, अशोका का भी. अशोका का भी. And I think recently मैंने संतोष सिवन की एक फिल्म देखी है, ये क्या कर दिया भाई, रैंडम, मतलब he is also gone up on some trajectory. I'm sure, जैसे एक इसके पहले मणिरत्नम की लास्ट फिल्म आई थी सीसीबी करके, उसका फुल नेम मुझे याद नहीं है उसको, एंड इट्स आल्सो शॉट बाय संतोष सिवन. आई वाज रियली स्टोक्ड टू वॉच कि भाई संतोष सिवन ने शूट किया है, मणिरत्नम ने बनाई है, एंड उसमें ही वो भी है, रोजा का मेन एक्टर कौन है, वो है दैट गाय इज इन इट. आई एम टोटली फॉरगेटिंग द नेम. और वो इतनी जुवेनाइल शूटिंग है ना, मतलब रैंडम जूम इन्स एकदम, मतलब, and these guys, I don't know what's happened. Maybe it's some kind of an urge to do different things.
मुझे वही समझ आता है, वरना एक्सपेरिमेंट करने का वो है हाँ ना आइडिया, ऑल्सो हो मुझे सकता लगता है। है मे बी PS1 या आजकल जो मुझे मेरी ये हाफ बेक्ड एनालिसिस हो सकती है, बट मुझे लगता है कि नाउ मार्वल हैज बिकम लाइक अ स्टैंडर्ड फॉर action sequences or VFX or how to do these kind of big set pieces. तो मेरे ख्याल में जब जॉन विक आई थी, that was a different way of staging an action sequence as opposed to Captain America or whatever. लेकिन इंडिया में हम लोग शायद वो फॉलो कर रहे हैं जो मार्वल ने ऑलरेडी परफेक्ट कर दिया, एंड नाउ वी आर फेलिंग एट इट. But that's so unfortunate because Marvel के भी I would say that उनके the set pieces are not okay, fine, they're grand and they're big and there's obviously a lot of money नहीं. spent and all that shit, but they're not necessarily the best large sequences to be shot, you know. No, but they were when they first came out, right? Iron Man 1 was like a standard in how to fucking shoot 5 sequences. Like how to shoot a sequence where one person is fighting 10,000 people with a suit. So उसने एक standard set कर दिया कि अच्छा ये करना है तो ये reference है. But I think now we're just sort of stuck in that. इसीलिए मुझे लगता है RRR is considered so like such a good film by outside the audience because it offers a parallel to Marvel. It offers something that is not seen, that they don't see in. The vision is clearly different. Yeah. The vision is very different. The vision where it is coming from. इसीलिए मुझे लगता है कि a film like Tanhaji also, again, now that we're talking about Adi Purish and all that, मुझे लगता है Tanhaji also had a unique vision of action sequences. And I'm not saying it's done very well. We saw it together. Aditya and I think we watched it together. But I remember feeling good about it when I was seeing the final sequence of the action sequence. And I clearly remember कि यार ये कुछ नया है. So I think, yeah, so that's what I had to say. यार पता है क्या set pieces में ना I would again I've recommended this film too many times on this channel but I don't think ज़्यादा लोगों ने देखी है फिर भी. It's जो Waterloo जिसकी मैं बात करते रहता हूँ उसमें ना एक and this is one of those sequences that I think can never be done again for the simple reason that nobody will put that much effort because you don't have to anymore. कि उसने basically पूरा Battle of Waterloo recreate किया है and I guess उसने he would have taken a fucking helicopter shot or whatever where he is going through the whole battlefield and the exact formations of how the cavalry charge happened and how the infantry was lined up and it's real soldiers of the Russian army who were trained in that time ka warfare. So they are real soldiers who are pretending to be soldiers from a previous era and you can tell the difference. मतलब वो that is to me or even another film for that matter जिसका नाम मैं भूल रहा हूँ कौन सी थी मास्टर एंड कमांडर. मास्टर एंड कमांडर में भी काफी सही मतलब I really like those kind of things where you know तुम्हें बड़ा करने के लिए I'll give you an example. जैसे आजकल मेरे हिसाब से पता है बड़ा करने के लिए वो चीज चल रही है जो एक मीम हुआ करती थी जो रिक एंड मॉर्टी जिसने देखा है उसको पता होगा. रिमेंबर द इंटरडिमेंशनल केबल जो पहला एपिसोड था सीजन 1 में उसमें तो one of the gags was two brothers and then a Mexican armada shows up and then this one comes and then the moon crashes and then तो I feel like अभी सबके माइंड में सेट पीस करना है मतलब कि you have to add a bigger thing. Whereas I think even if you take a very small thing which is one army defeating another army with a very clever formation or with just a very simple tactic is in and of itself also can be a very great set piece. It's all about how you shoot it or how you stage it rather than this thing of कि अच्छा इसके लिए स्पेसशिप लाते हैं स्पेसशिप के ऊपर स्पेसशिप का कुछ और करते हैं मतलब पैसे खर्चा करो मतलब और मतलब I don't know why that has become our thing, you know, like for example sorry last thing अगर चोला empire could make like ships right है ना back in the day why can't I'm not saying you have to recreate all the ships वैसा but I'm just saying why can't you use a real ship or a real sort of this thing and try to work with practical effects. I think that would be I am very much in favor of those as much as can be possible. I know it can always not be done but यार मेरे को लगता है कि अगर मुझे दिख रहा है कि ये कितना गंदा VFX है जैसे मैं दीवार की बात कर रहा था तो आई थिंक मणिरत्नम को तो पता ही होगा
हम लोगों को क्या पता है तो anyway हाँ हिमांशु So my problem with PS1 was very different. It's different from practical and VFX. It's basically throughout the throughout the time I was watching it, I felt like they were taking the audience for granted. Yeah, not for granted, but like kind of thinking for the children. जैसा लगा कि it's meant for kids or something. Because what's happening is they are explaining something, they're explaining it again, and then they're showing it again, and it's kind of getting drilled ki acha these people are behind this scheme or whatever. So there is this, like, initially when they introduce Aishwarya, they show her as this, majestic, I don't know, like the schemer who's like so beautiful, her beauty is kind of controlling people around her and whatever. And it was fine, right? Like they kind of hid her face and all that so that itna dikhe na, and she very few words may we got more out of her character. But then later on na, they keep showing her again and again, like whenever there's a scheme happening, a group of ministers are talking, Nandini knows, Aishwarya's character, she knows about that those people talking, so she's behind the curtain listening, and the camera goes to her ki, she's there behind the curtain listening. I'm like, this character wasn't supposed to be ridiculed to such a low place कि उसको मतलब बार बार दिखाओ कि वो सुन रही है, हर जगह जा रही है. Her spy could have been there or somebody else could have been there or whatever, like why ये is वो the biggest ये वो character. हीरो कॉम्प्लेक्स होता है ना कि मतलब हर चीज पर्सनली जाके करेगा मतलब it's not वही like तो इतना बड़ा उनका kingdom है, she's so far, she's a queen or whatever from of some other place, हाँ right? Why the not of another stature or whatever, she's not supposed to be everywhere, right? And then correct it was interesting to see ki she had a spy, she got a hold of a spy and she convinced him to do tricks for her, right? It was interesting till then, but then suddenly we see her doing everything, going everywhere, hiding behind curtains, trying to influence people. It feels like you are trying to make me look stupid or whatever. You're trying to like spoon feed me information here. It could have been, you could have shown someone else doing it, it could have been realistic also. And I felt like that continued forever throughout the film, because this spy character na, he's shown to be like a child only, who has no idea, no agency, nothing. The lead protagonist. he's वो तो just an इधर से उधर adventurer वो खाली adventurer है वो इधर उधर थोड़ा Wait, is हाँ. this but the Karthi character? Or yeah Vikram I character? don't know who the actors are Not Vikram, basically. I don't know नहीं, man not I Vikram. couldn't tell one So, from the other if I like विक्रम का वो depended मोनोलॉग on it. इतना लंबा है, वो जो मतलब ऐसे मूवमेंट वाला ना जो ऐसा हाँ, कैमरा इधर उधर हो रहा है बस शॉर्ट वो फिल्म बोल टाइप रहा है, वाइब हाँ बस वो बोल रहा है कि मैंने प्यार हाँ किया था उससे और उसने हाँ मुझे धोखा दिया करके he is going on and the camera is shaking around like something great is happening. Nothing great is happening, okay, like he's talking about his heartbreak. that's an old dialogue trick na to make a very thaka hua dialogue sound very this thing you just repeat it again and again and again from a character and have him go crazy so then it become eventually audience ही बोलेगी यार हाँ भाई ठीक है होगा कुछ बड़ा होगा मतलब क्या होगा और विक्रम is like अपरिचित ही लग रहा है वो तो वहाँ पे, वो है ही वो he is a अपरिचित actor no I that's know, what yeah it's like that's what I वही realized आ in the गया. movie like halfway through मेरे को तभी realize हुआ अपरिचित की बात उठी है तो कंटारा भी बात कर लेते हैं. कंटारा भाई की बात कंटारा करते हैं मस्त but लगे यार मेरे को, बहुत अच्छी. एक सवाल है by the way हाँ, before the Hobbit Bharat was looking for you from a very long time away you are a true lover in before because he तेरे said ब्रह्मास्त्र के Bharat टाइम से लोग बोल रहे हैं भरत कि भाई भरत. वेलकम बैक क्या Thank भाई you. इधर ही था वो बस अभी 2 एपिसोड नहीं आया तो also Vihari Venkat has asked a very interesting question what according to you is the last good Hollywood movie released none of the superhero sequels please I think Last Duel was very good there were lots more अच्छा actually वो तो काफी पहले आई थी sorry यार वो बहुत तो सारी आ गई है. I don't हाँ think we have watched enough. हमने ज्यादा देखी नहीं है Let's see Hollywood films. हॉलीवुड फिल्म गूगल कर रहा है Hollywood films 2022. Let's see. हाँ कौन सी आई है आपकी कौन सी फेवरेट है फिर हम भाई बता सकते टॉप हैं गन आई है. टॉप गन वी लाइक हाँ, वी स्पोक अबाउट इट नॉर्थमैन नहीं देखी मैंने. मैंने नॉर्थमैन मैंने देखी है, भी मेरे को इतनी देखनी थी अच्छी पर नहीं है. अमेज़न पे 250 रुपए का रेंट था उसका तो मैंने बोला It's fuck not this as good as The Lighthouse for sure. So there is some. oh I didn't like the lighthouse that much I thought it was I very really nice like. भाई स्पॉइल मत करना, दोनों फिल्म मैंने नहीं देखी. okay I thought तूने Witch lighthouse देखा was है? very nice हाँ विच देखी है, विच बहुत सही लगी. हाँ Lighthouse और Witch दोनों एकदम सही है.
Northman na, even though well made, well controlled, like every shot understood like what his vision was and everything is on point, and yet there is some issue with it. Like it's thoda sa weak. I think the actor ka issue there is like very stone faced, you know. You can't tell Okay. anything. मेरे को लाइट हाउस का वाली एक कंप्लेंट था that I liked the movie, but it seemed more like an improv acting class with two great actors than a movie. Like, okay, fine, I get the themes and all that stuff and the whole lighthouse. In fact, I saw a very cool Nope. Actually, Nope was the Huh. last Hey, great. Nope was very Nope good. was Nope, brilliant, man. brilliant movie. बहुत एक ही एक देखी देखनी वो. थी मुझे डू रिवेंज करके एक आई है नेटफ्लिक्स कौन सी? डू रिवेंज डू Okay. रिवेंज इट्स बेसिकली बेस्ड ऑन Shakespeare this thing but a comedian set in like a high school situation loosely no Shakespeare. sorry no not Shakespeare my bad loosely inspired by Alfred Hitchcock's Strangers on a Train. Oh, I love But- Strangers on a Train. Yeah. And Yeah. but it's set. If you look at the trailer, you'll be like, because it's like a teen drama, a teen thriller drama. Mean Girls type का है ना. हाँ, Mean Girls type का है और Netflix ने produce किया है तो एकदम Netflix type है. But it's got really very good reviews. मैंने वो मूवी देखी थी 2 दिन पहले ही, मिस्टर हैरिगन्स फोन. What is that? And how's that? एक horror ये film है ट्रेलर ना? नो इट्स अ थ्रिलर. द ट्रेलर Thriller, वाज right. वेरी इंटरेस्टिंग. मुझे लगा कि बहुत सही होने वाला है, बट इट्स नॉट एग्जैक्टली द बेस्ट फिल्म मेड और समथिंग. इट्स ओके, बट मतलब इट्स नॉट इवन थ्रिलिंग. इट्स जस्ट लाइक अ स्लाइस ऑफ लाइफ काइंड ऑफ थिंग. ठीक है, देख सकते हो इफ यू वांट टू. आई सॉ दिस वन यार. डॉक्टर जी देखा मैंने कुछ 1-2 दिन. What do you think? How's that? हैव यू गाइस सीन डॉक्टर जी? नहीं. I want you guys to see it. There is No, something smart about it. There's something smart about the film. It's not like Ayushmann Khurrana की हर फिल्म तो अच्छी नहीं होती ना. Some of them are good, some of them are great. हाँ. Some of them ठीक है, थोड़ा ठंडा type. This one was not bad. I felt like it was smarter than the previous ones. Even But- Rahul Desai liked it. Sorry. It's not bad, but there is this one issue and I want you guys to clarify. It would be interesting if you guys can watch it and tell me. It's like I have 2 issues with the film, but ये spoiler. I'll try not to spoil it. तू spoil करेगा हिमांशु तो हमेशा नहीं, ही I'll बोलता try है. not to spoil it. फिर I'll तू just- कर देता है spoil. नहीं, I'll not spoil it. I'll not spoil it. I'll just, if you guys have seen it, then you can confirm my issue with this. ठीक है. So trailer में है कि he is struggling with the idea of a male touch. He is basically a guy who has to lose the male touch to become a doctor, a gynecologist. He's a male gynecologist, right? That's what the story is, right? हाँ. Do you think in the end, like, हमने देखी नहीं है वैसे तो. तू audience को पूछ रहा है क्या? अच्छा. मैं सबको पूछ रहा हूँ, do you think in the end it should be his character who says I've lost it? Do you get me? I've lost it. I've lost the male touch. हाँ, मैंने so- I'm cured. I'm fine. It should, matlab you're saying that somebody external should be the one or a woman should confirm. that- हाँ, confirm it, right? A woman should confirm it, right? हिमांशु. And that would The be a problem is he confirms it. I felt like what the hell. खुद ही. It's like यार मैंने तो खाना बहुत अच्छा बनाया. You know, it felt like that. मेरी कोई- क्रिकेट मैं क्या इंडियन टीम के लिए ओपनिंग बैट्समैन बन सकता हूँ? हाँ, मैं बन सकता हूँ. पहले नहीं बन सकता था, अब बन सकता. हाँ, अब मैं बन सकता हूँ. हाँ. Get out of here, KL Rahul. Anyway, so And then wait, there's one more issue. He goes and explains how he lost the male touch to the female characters in the movie. He goes to them and explains it, and they are trying to say something, and he cuts them off and he says this point. And it's a mansplaining. you know this ending. I haven't seen this one, but I remember Wiki Donor, which I liked when I watched it when it had come out. When it had come out, it was a very path-breaking. It was the first of its kind, so it was very this thing. But उसमें I feel like कि वो issue भी थोड़ा weird था. अगर मैं उसको जाके देखो, अभी हमने किसी ने question नहीं किया उसको उस time पर. But like, why is Yami Gautam pissed off that he's a sperm donor? Like, it's just something to be in No, with, I think and they address that in the Societal. movie also,
No, they addressed it in the movie also where I remember a scene where her dad tells her ki, you know, you're fucking, what is wrong with you? Why is this such a bad thing? You But know? okay, और I फिर think वो it was एंड addressed. में वो बच्चों का सम्मेलन वो अरेंज करता है ना, पता नहीं क्यों। मतलब वो तो थोड़ा बहुत अजीब अजीब चीजें होती है उसकी मूवीज में। But मुझे as far as I remember, and correct me if I'm wrong, but जितना मुझे याद है, she's also angry, more angry because he didn't tell her, and she had a हाँ problem with secrets and all that. ओ कुछ ऐसा था. एंड हाँ वो नहीं हाँ वो प्रेगनेंसी वाला एंगल भी था। हाँ करेक्ट 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 Correct. बिकॉज she was trying to राइट get pregnant, राइट हाँ, right, with him. वो नहीं हो रहा था, that was a वो हो problem. नहीं रहा था. And वो कहती है टेस्ट कराया कि नहीं, whatever, वो bullshit भी था. तो And he even says though मैंने that, नहीं कराया. हाँ हाँ, Whatever, वो हाँ, थोड़ा you- flimsy है. I get what you're saying. It's a little हाँ flimsy. But पर I अभी think उसको अभी ये सब खरीदने का फायदा नहीं है, मतलब वो चीज तो there है। is a Reddit comment about this one, Dr. G. It's like basically पहले की फर्स्ट फिल्म में वो सेक्स क्लिनिक गया था एज अ पेशेंट, एंड फिर 2-3 मूवीज में वो पेशेंट बन के आया, फिर थर्ड या फोर्थ फिल्म में वो अपने मम्मी पापा को लेकर आया एज अ को पेशेंट बधाई हो. बधाई हो, फिर एक बार वो एंड देन होमोसेक्सुअल आदमी बन के भी आया कि हाउ वी कैन फिर टकला होके आया. फिर फिर टकला टकला हो होके गया आया, गया। और अब ना वो डॉक्टर जी में ही इज ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द टेबल इन द सेक्स क्लिनिक His बेसिकली. transformation into Anu Kapoor's character is complete. हाँ, But Yeah, they हर reference that. Sorry. हाँ इट्स इन कमेंट था यार रेडिट का. but नहीं नहीं But it's interesting because it's directed by a female, right? That what you हाँ said, Himanshu. हाँ, दैट्स व्हाई इट्स वेरी वियर्ड, यू नो, क्योंकि एंड में वो जब जाता है और वो लोगों को बोलता है ना कि मैं समझ गया तुम क्या बोलना चाहती थी, मैं समझ गया कि यू वर ट्राइंग टू टेल मी दैट आई पर शुड वो हैव. तो बट दैट इज आल्सो दैट आई फील लाइक मैंने देखी नहीं है तो मैं आई कैन बी कंप्लीटली रॉन्ग, बट वो यार अभी उसको किसी ने कुछ बोला है और अभी अगर वो समझ गया है तो वो वही बोलेगा ना, अभी और क्या बोलेगा। सब लोग आके उसको थोड़ी ना, अभी वो मूवी बना रहे हैं ना, वो सबको आके उसको कान में थोड़ी ना बोलेंगे हाँ आप समझ गए अभी आपको पास चेक बुक मिल गया। ऐसे नहीं होता ना, मतलब ही इज जस्ट लर्नड समथिंग। आई थिंक दैट इज बट imagine him going up to a girl, the girl is trying to tell him something right at that point, कि what I meant was, what I wanted to tell you at that time also was Okay. that this is what I meant, और वो उधर ही काट के बोलते हैं कि I know what you meant and this is what you meant करके बोल देता है, and that ठीक is है how the यार। movie ends. हाँ ठीक है यार, कर दिया आयुष्मान खुराना ने. I was कितने Goodbye, by the way. I was Goodbye. Goodbye is what? It's the वो Boman Irani Amitabh No, Bachchan movie, no? no, that hasn't Sorry, been बमन, good. sorry. Then which one? That Is, could have been titled Goodbye. which one is? Fuck, I don't know. What is that movie called? That was ऊंचाई also- That's ऊंचाई ऊंचाई. yeah, ऊंचाई. I don't know And why I thought it was Goodbye. नहीं, उसमें भी डेथ वगैरह है ना, उसमें डैनी डेंजोंगपा के कैरेक्टर की डेथ हो जाती है. Anyway, Goodbye कौन हो सी जाती movie है. अच्छा हाँ, ट्रेलर में ट्रेलर में ही हो जाती है यार. हाँ हाँ हाँ. तो Goodbye कौन सी है? यार Goodbye ना is this film with Amitabh Bachchan and Neena Gupta and Rashmika Mandanna, which is basically about the death of this mother figure and how the entire, it's like a funeral film. There's a genre of films called Once funeral again. films. Yeah. Yeah. So, and but it's I watched it because one of my like now very good friends who has acted in the show that I'm working on, he has acted in, so I watched it for him. And while I love his performance and most of the performances, I didn't enjoy the film at all. I thought वापस से बॉलीवुड मौत पे रोटियां सेकने आ गया फ्यूनरल फिल्म बना के। हाँ, also I क्या was हुआ थोड़ा सा बट मूवी में? uncomfortable, थोड़ा सा uncomfortable इसलिए था क्योंकि ये विकास बहल ने बनाई है फिल्म, तो वो एक माइंड में मेरे चल ही जाता है कि यार ये बंदा थोड़ा नहीं फुल ऑन प्रॉब्लमेटिक आदमी, alleged sexual molester or whatever. But the movie itself is also like a death happens and that's it. Everybody reacts to it. That's it. That's literally the whole film. And बहुत ही like half-baked like science versus superstition angle in which superstition wins by. So yeah, like I'll give you an example. And yeah, this is a spoiler. स्पॉइल करना कर दो मुझे, मैं वो मैं नहीं स्पॉइल कर देखने दे. वाला। जैसे मैं भी नहीं देखने वाला. जैसे रश्मिका मंदाना का कैरेक्टर है, वो बड़ी ऐसे साइंटिफिक है, ठीक है. शी इज लाइक ये क्या क्रियाक्रम हो रहा है, लाइक उनके पैर क्यों बांध रहे हैं, उनका सर ऐसे क्यों, नाक में ये क्यों घुसाया हुआ है,
And then the whole film, everybody explains to her the signs. It's like one of those WhatsApp forwards. कि अरे यार. उसमें literally एक पंडित जी का character है who explains the science behind touching feet. जो कि it's not about the feet, it's about transferring your energy, your hand का energy to the head. So you are pressing this chakra with your hand. So that's why we should touch feet of our elders, right? तो सब लोग इधर क्यों नहीं हाथ मारते एक दूसरे सब लोग टपली मार के क्यों नहीं घूमते पूरे देश में फिर वही मतलब अगर और यही लॉजिक है एक तो बहुत ही weird scene है जिसमें एक कौवा आ जाता है, ठीक है, while the dead body is kept in the porch of the house and she shooes it away, Rashmika's character, and everybody said नहीं कौवा नहीं, वो आत्मा थी तुम्हारी माँ की, वो आई थी तुम्हें ग्रीट करने, and by the end, like at that point she rubbishes it, and then later in the end of the movie when she is supposed to have transformed into this fucking superstitious person, the Kavva comes again and she says Mama, and that's the end of that scene. but Because- is it shown as something that she's going insane, or is it like just No, a loving It's- scene? it's a centrist Fate. approach. It's like, you know, Yes. थोड़ी बातें इनकी सही है, थोड़ी बातें इनकी सही है, ए हटे वो- रे हट and it literally, the voiceover literally says कि जो आपको समझ नहीं आता वो हमें नहीं, सब कुछ जो समझ नहीं आता, ऐसा कुछ है कि not everything can be explained by science, so why not have faith. भाई मैं तेरे को बताऊं, ये मेरे को पता है कि ये सेंट्रिस्ट अप्रोच ना, या ऐसी सब चीजों में जो सेंट्रिस्ट मेरे को बहुत फनी लगता है. हम लोग जैसे अभी प्रखर की बात कर रहे थे थोड़ा टाइम पहले, ठीक है. अभी ये बंदे ने रिसेंटली एक वीडियो बनाया था कि he made a video on Andrew Tate. Is Andrew Tate right? Okay. Now this is a 2-hour long video, and if anybody unironically has watched, I haven't ironically also watched this guy, but I watched only clips of him by other people who were reviewing his content, which is that, and this guy is sort of following this centrist line ki he is challenging the male idea, the gender idea. He's just intellectual. You know how, Bharat Himanshu, when we used to have political science classes in college, and after the first course was over, for the next 2 weeks, how all of us were insufferable assholes who would quote like Hegel and whatever the fuck, and talk like fucking we are geniuses. He does that like really insufferable to defend Andrew Tate, but also said that I don't agree with him. I don't think he's right, but he has this. हाँ, तो ये मुझे जो अप्रोच होता है ना, ये तो हमेशा बहुत ही फकौल अप्रोच मेरे हिसाब से. एक कमेंट्स अच्छे हैं by the way, people are asking shit. सब लोग भेड़िया पे पूछ रहे हैं, काफी लोगों ने पूछा भेड़िया, कंतारा पे पूछा है. कंतारा बेस्ट मूवी, कंतारा बेस्ट मूवी. Where did you watch it पूछ रहे हैं, तो थिएटर में लगी हुई अभी तक मैंने नहीं देखी यार, मैं नहीं देख पाया. It's not a bad film. I personally was not like overwhelmed like Himanshu was, but it's a very very good film. Like it's a solid, but उसमें भी थोड़ा बहुत नहीं, full on मसाला टाइप का फिल्म है, तो I probably had my expectations कि मैं एक बहुत ही मस्त कोई इंडी टाइप फिल्म देखूंगा, बट उसमें मतलब वो नेवल वगैरह है, उसमें नेवल को चिटकियां काट रहा है. See, I get you, but it's not like there's an item number, and it's not like they're trying to they show it as a bad thing, right? They show that he molested her. No, He was a bad guy. He's a guy who's drinking and he was drinking, but he does it twice, thrice as a joke, and he gets away with it because the girl is like, oh, of course, like you are my life partner and all that. I think so. See, fair enough. It ended up them falling in love, which is और ऐसा कोई उसका problematic. ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, मतलब उसका ट्रांसफॉर्मेशन अलग चीज में हुआ. His transformation was not in gender sensitivity. It didn't. It's not like he became a good guy. I get you. Yeah. तो ठीक है, fair enough. But overall it's very enjoyable यार. उसकी shooting बहुत अच्छी लगी मुझे. In fact, उसमें fight sequences, Aditya, you should watch it also because कंतारा ना यार, I really wanted to watch, but this last couple of weeks so crazy, तो मैं नहीं देख पाया, but हाँ देखनी तो है मुझे, कभी ना कभी देखूंगा. कंतारा की एनिमेशन तो काफी excited of ऊंचाई's making. Sorry Himanshu, you were saying something. नहीं कुछ नहीं. कंतारा का basically मतलब the way it's shot and all, there is some magical realism and some VFX is very interesting. It's not real. Yeah. It doesn't look very real, but the way they have done it, मतलब अच्छा है. मतलब you can maybe if you would have seen it, अच्छा लगेगा तेरे को. It's interesting.
And some it- of the scenes are very flawless. Yeah, very flawlessly done. yeah. There is one scene where, and it is very much like Sarpatta in the sense of the rootedness, and एक जो एकदम मतलब ग्रास रूट जाके मतलब मिट्टी में जाके शूट किया है वैसा फिल्म है, जलीकट्टू वाला vibe है इसमें. जल्लीकट्टू वाला वाइब है. एंड एक सीन तो मुझे मेरा फेवरेट है जिसमें देयर इज दिस लोकल गाय, दिस वर आदित्य बिकॉज़ हिमांशु वॉच्ड इट. एक लोकल बंदा है, बुढ़ा था, वो सिर्फ चिलम फूकता रहता पूरे टाइम, ठीक है. हाँ, And तू he- बता मेरे को इसके बारे में. and he हाँ. keeps passing comment like random truisms of life, and the camera keeps like zooming into his face like randomly. हाँ ये करना चाहिए ऐसे. And this guy is sitting with him smoking up, and he's about to go beat up somebody, and he's waiting here because he's also this Chilam guy is also the main weapon maker in the town. So he's waiting for his knife to be sharpened on the fire, and he's also smoking Chilam with him, and he's giving reviews like this, and then in that state of ganjedi pana whatever, he हाँ. fights off these gundas, and it's very very well done. It बहुत ही सही तरीके से इमेजिन किया हुआ fight. अच्छा है. Nice. हम्म. I will watch this. भाई ऊंचाई वाला by the way, sorry, 16. हाँ. ऊंचाई वाले जो बोल रहे हैं ना, I think this is maybe a reference to me saying this thing about the making of Suraj Bajata movies is a movie in itself. हाँ, correct. ये प्रेम रतन धन पायो का the bonus content is the content. So you The guys should making all is watch it. The making Yeah. is the movie, and the Yeah. movie should have never been made. Like it's They should have it's that stopped kind it. of. हाँ. But ऊंचाई, I am excited like in general, in like in an earnest, क्योंकि इतने सारे अच्छे एक्टर्स हैं यार. मतलब मोहन ईरानी है, अमिताभ बच्चन है, who else? नीना गुप्ता है, Anupam Kher. अनुपम खेर also. Pariniti Chopra is in it, which is And okay. a lot of people are excited because Danny Denzogpa and Amitabh Bachchan have come together after a long time, I think, after like 30 years. Danny Denzogpa. एक सेकंड. क्या बोला तूने अभी? Who've come together? Amitabh Bachchan and Danny Denzogpa. ये ट्रैक कौन कर रहा था? ये दोनों की पेयरिंग नहीं कौन भाई, ट्रैक कर रहा है? भाई अग्निपथ में थे, बट हाँ. उसके बट ऐसा कोई ये तो है नहीं कि मतलब ये कोई शाहरुख सलमान तो है नहीं कि मतलब कोई ट्रैक कर रहा है इतने साल से नहीं हुआ. ये क्या, दिस इज लाइक व्हेन पीपल It's like Shahrukh and Deepak Tijori. हाँ, दिस इज लाइक कि कोई रैंडम मूवी उठा ले मिड 2000 से, कुछ मतलब पता नहीं कुछ जी अजनबी या कुछ भी, अजनबी के 17 साल हो गए. मतलब who's counting this shit, you know? So anyway, 25 people still showed up, dude. We didn't have to 30 लोग तो आ गए थे वैसे. Also बता ना, shout बोल out- ऊंचाई के बारे में बता. क्या ऊंचाई देखा तूने? is- मैंने ट्रेलर भी नहीं देखा. मैंने भी नहीं, अच्छा है. मैं से ट्रेलर पे क्लिक नहीं किया गया. नहीं करो, नहीं हुआ अच्छा है यार. ट्रेलर, अच्छा है ट्रेलर, इज फन. अभी आज क्राउन का ट्रेलर निकला, मैं नहीं देख पाया. इवन दो आई हैव सीन एवरी सीजन ऑफ द क्राउन वेरी एंड आई लाइक द शो. दिस सीजन ना इट्स लाइक सास बहू, बिकॉज़ नाउ इट्स Now I it's love- come to Abhi का. Can I just sorry, हाँ हिमांशु. बोल नहीं तो बोल. मेरे को एक कमेंट बहुत ही फाइन लगा, तुम्हें को पढ़ना तो बोल ना. शौर्य पाठक का एक कमेंट है, साउथ इंडियन naval obsession is age-old story. We love criticizing it, but we never criticize Tarantino's foot fetish. Samaj, this is a society we live in, guys. So this is what. हाँ, great. मुझे I just समझा thought- सकते हो क्या प्रॉब्लम है? What is the South Indian naval fetish? Is it भाई बहुत नेवल फेटिश है. तापसी पन्नू ने पूरा इंटरव्यू निकाल दिया इस पे. because Oh, I did not know. was it real, or is there No. a debate on how big of a naval? No, Dude, this is real. It's not a debate. This is very Thing real, is and real. it is attached to a lot of harassment also, because Oh, fuck. yeah, because Tapsi Pannu said that a bunch of like producers would just like, they would ask you to undress and show them your navel for an audition, because that is what. Dude, Tapsi they- Pannu said this in an interview and stuff. यार no? इसी का कुछ वेरिएशन का है, एग्जैक्ट ये नहीं था होगा. Oh, But fuck. she said that the naval obsession is crazy. Like उसको हर फिल्म Isn't में it a little weird? Isn't this You like know why I just got it's a- confused right now, because I thought naval obsession was NAVAL, the ships. I was like, what the fuck is happening? Thank you guys for joining us. We'll see you next week with another That episode. explains- naval PS1 में naval दिखाया, मुझे लगा PS1. like
मुझे लगा you're talking about सही ships, बात you है know, actually. like I'm getting so confused about like marine, like you know, like अरे we got it यार, we got it. समझिए. हाँ, But yeah. बोलो क्या enable, अब बताओ. I'll have to understand. Anyway, that was all that I think that is all we had to say on that topic. But Krunal Ramteke has said missed you guys. Thank you man. Thanks a lot. We're glad to be back. We'll try. हम लोग अभी रेगुलर होने वाले हैं क्या? ये चिल स्ट्रीम उसके लिए भी हम लोग पॉडकास्ट पे अभी आगे क्या कर रहे हैं, क्या क्या करना चाहिए वो सब बताओ थोड़ा. यार मैं वो ना सब. नवंबर में ये कर सकता हूँ कि I can probably put out more stuff on the channel. I have ideas for videos which have accumulated over the past half a year since I put out. Past 3 years, friend. It's past 3 साल से तो मेरे को बोल रहा है आइडिया के बारे में. तो वो नवंबर में कर सकता हूँ because I'm free. Correct. So yeah. And मैं रेगुलर पॉडकास्ट पे तो अब आ ही जाऊंगा वापस क्योंकि my shoot ends at the end of this month. So yeah. मैं भी आ जाऊंगा. मेरा थोड़ा शायद डिफिकल्ट होगा because I'm traveling, but otherwise I'll be fine. भाई तेरा हिमांशु, बुक रिव्यू का क्या हुआ? मेरे बुक रिव्यू यार मैंने बुक्स पढ़ ली है, बट मेरा प्रॉब्लम ये है कि बुक रिव्यू ना लिखने में टाइम लगता है. मतलब मैं वो जो मैंने 2 डाले थे मैंने उस पे काफी टाइम लगाया था. मतलब मैंने मार्क करके साला सब कुछ वापस से पढ़ा काफी कुछ, एंड आई वांटेड टू राइट इट थोड़ा सा तो थोड़ा वेल. लेस तो इन डेप्थ कर दो ना, थोड़ा सा लेस इन हाँ डेप्थ कर अभी दो. वो I'll कर tell you why. सकता हूँ. हाँ I'll tell you why because I hadn't read of any of the books. So for me, even the fact, like if you give me like instead of 1,000 words, if you give me 200 words about it, also it would have sold it to me. ठीक है ना? तो तुझे शायद इतने इन डेप्थ जाने की जरूरत नहीं है because like it's like introducing me to a film as opposed to analyzing the film for me and telling me कि हाँ भाई ये है इसमें ऐसा ऐसा. राइट You just राइट. introduce कर दे. I think that is. हाँ सही बात है, सही बात है, वो तो कर ही सकता हूँ. साथ साथ में बोर्डजुआजी पॉडकास्ट तो आ ही रहा है. इफ यू गाइस डोंट नो, बोर्डजुआजी इज आवर न्यू पॉलिटिक्स एंड न्यूज पॉडकास्ट एंड इट्स अ लॉट ऑफ फन. उसके 4 एपिसोड आ चुके हैं. सो प्लीज प्लीज चेक इट आउट एंड सपोर्ट दैट आल्सो सो इट ग्रोज. मेरे हिसाब से तो बहुत ही फनी है, मुझे तो बहुत मजा आता है वो करके. तो आप लोग को सुन के मजा आता है तो अच्छा है. देखो. हिमांशु तू क्या कह रहा मेरा था? नहीं, तो मतलब तेरा what is क्या coming शेड्यूल out होगा? this year. हाँ नहीं, मैं तो तेरा हर एक तो हफ्ते फिल्म आने वाली है. पॉडकास्ट पे हाँ आऊंगा. हाँ, वो तो ऑफ हाँ कोर्स है. एंड देन अ मूवी जो हम लोगों ने बनाया एक साथ, it's completed, only almost completed to the last couple of things. I just need like 2-3 days. मैं सोच रहा हूँ ये दिवाली का छुट्टी मेरे को मिलेगा तो मैं बैठ के खत्म तो कर बेसिकली तूने जो कहा था वो नवंबर रिलीज करना है तेरे को, एक फेस्टिवल के साथ रिलीज. वी आर नॉट टेलिंग एवरीवन व्हाट फेस्टिवल इट इज, बट यू वांटेड टू डू अ फेस्टिवल रिलीज. तो अभी वो फेस्टिवल रिलीज ही होने अभी वाला है. बोल मत दियो फेस्टिवल. बोल मत दे हिमांशु, गलती से बोल मत दे. मैं नहीं बोल रहा, बट हाँ होगा हाँ डेफिनेटली होगा because हाँ it's done. I am currently working on the poster and the trailer ना, वो तो मैं like निकाल दूंगा, and after like 1 week of the poster or the trailer the film will also come out, so it will happen in November. And please I'm telling you guys, it's a hilarious film. It's damn funny. When it comes out on the channel, we have noticed that हम लोग के पॉडकास्ट को 1,500-2,000 अभी आजकल व्यूज भी आते हैं, बट फिल्म्स को उतने नहीं आते. तो प्लीज watch the films also. They're much shorter and they take a lot more, 100 times the effort. So please give the film also the kind of love that you all are giving to the podcast and the streams and all that. तो वो And तो I think प्लीज this is देख the ही लेना. most discontent film Yeah, on our channel because it's in line with our ideology. correct. And also you can watch the other films also. हमारे चैनल पे और भी बहुत सारा कंटेंट है जो आप देख सकते हो. एक्सटेंसिव नहीं है, हम लोग फुल टाइम ये नहीं कर पाते हैं तो उतना ज्यादा नहीं है, but there's a lot that you guys can watch. So if you're new here, you can go apart from the podcasts which are obviously there, lots of them, but you can also check these out which will be fun. यार मेरे ना इधर 1:30 बज रहा है तो मुझे थोड़ा सोना पड़ेगा अभी, I feel. So Recommendations करते हैं. if you guys want to continue, I can still continue, by the way. नहीं मेरा भी हो गया, मेरे को भी 1 घंटे में सोना है. हाँ सब लोग लाइक कर दो खाली स्ट्रीम प्लीज, अगर करना चाहो तो. नहीं करना मत कर जाओ फिर. तो चलो रिकमेंडेशन कुछ है क्या तुम लोग की? हाँ मेरे बहुत सारे. मेरे भी एक तो है आई थिंक. तो दे पहले तू. एक तो यार a collaborator, not a collaborator, but like somebody who we have collaborated with in the past, Paroma from the Cinema Wali YouTube channel. She's put out a video
on Shatranj Ke Khiladi, which I really liked, and I loved that movie. And I seeing all these period films, I think that people who are in power in the industry do need to relook at that film and films like that in order to get a better semblance of period filmmaking and all that stuff. And वो सब और And- एक और चीज का हाँ क्या मेरे को शतरंज की खिलाड़ी में बोलना था कि I हाँ. don't think we've seen that kind of filmmaking in a period setting in India, which is why I was excited for, as I said, about कौन सी फिल्म थी अक्षय कुमार की recent period film, पृथ्वीराज सम्राट Prithviraj Chauhan. it had the promise of that kind of rootedness, the groundedness, sorry, not वो rooted. हुआ नहीं बिल्कुल वो उसका हुआ नहीं. ऑपोजिट ही हुआ बट हुआ नहीं, but I was excited for that, but हाँ वो नहीं हुआ, but yeah. दूसरा कुछ भी था मेरे पास रेकमेंड करने के लिए मैं कोई तो YouTube पे ही कुछ तो वीडियो था बट नाउ आई फॉरगॉटन सो फक या नहीं राम हाँ सेतु आने वाली है. सॉरी एक तो वो हाँ I want to recommend once again number one bullshit podcast जो शाश्वत महेश्वरी who's also been on the channel before. He's a very famous stand-up comedian. उसका podcast है number one bullshit. You'll have to type out the full name on YouTube because YouTube censors out bullshit, I think. So you can go number one bullshit podcast. It is the funniest podcast I think out there. So please go listen / watch that. So I have a मुझे whole ऐसा list लगता of- है कि we should pick a film that's about to come and try to watch it together and see, because if we say right now कि अभी ये करने वाले तो होता है ना, like we'll be able to pull it. Do you guys want to watch like Ram Setu or Thank God or something together? Or यार would मैं love देख to. नहीं पाऊंगा बट तुम लोग देख लो. एक कमेंट आया था किसी का, वही जो मेरा फैन है apparently. Before. Before. हाँ उन्होंने लिखा है कि he wants to watch The Legend of Maula Jatt, but मौला कहाँ देख रहा है इंसान, क्योंकि इंडिया में तो रिलीज नहीं हुई है पाकिस्तानी फिल्म, क्योंकि मुझे देखनी है. It's you guys have seen the trailer of it. I Fawad Khan know वाला of ना? its existence. हाँ It's like their Brahmastra. So it's been in the making for half a decade and all that. And Fawad Khan, उनका रणवीर, I think. उनका रणवीर कहना सही रहेगा. हाँ वैसा ही ठीक है जो इंटरचेंजेबल है सब वैसे. तो वो फिल्म आई है, apparently it's good. So वो देखिए. Anyway, Red Pose मेरे पास है काफी, मैं बोलूं. बोल. हाँ दे दे. So एक तो यार मैं बहुत सारे YouTube देखा हूँ पिछले 2 दिन में, मुझे छुट्टी नहीं हुई. So there is this like 1 hour plus episode of the Internet Historians new video basically, which is The Hole, right? Or The हाँ. Cave, one of those. You guys have watched The it? cave. हाँ देखा तुम लोग ने? हाँ मैंने देख लिया था पर मेरे को अच्छा नहीं है तू बता. हाँ भाई मुझे तो बहुत ही सही लगा. मतलब मैं कहा यार इस लेवल की तो डॉक्यूमेंट्रीज बनती है, और उसने मतलब अपने स्टाइल में वो स्टोरी बताई है, which was really, for me it was like a whole gamut of emotions. It's surprisingly heartfelt to me at least. What is it about? The Cave? Just watch it. It's on YouTube. It's on YouTube, dude. It's a proper 1 घंटा 10 मिनट की ऐसी एक फिल्म है बेसिकली. देखेगा तो या ठीक है, देखता हूँ. आदित्य क्या कह रहा था तू? तेरा कुछ थॉट्स है क्या उस पे? तू कुछ कह रहा था? नहीं मेरा यार इंटरनेट हिस्टोरियन ना मैं बहुत बड़ा फैन था उसका एंड आई स्टिल लाइक हिज कंटेंट अ लॉट बट वो उसका जो उसको अगर कोई ट्विटर या किसी पे फॉलो करेगा ना वो थोड़ा सा सस बंदा है वो. मतलब he's incognito so far. मतलब he hasn't revealed his identity. I think is anonymous, sorry. And like I don't know, उसका थोड़ा weird है politics, but that shouldn't matter. Anti-feminist. I think everything. I think he is a member of like alt Ben Shapiro kind of that zone of this thing. Maybe not, maybe I'm wrong, but that shouldn't matter anyway. But so that his videos are top notch too. Yeah. Content में तो ऐसा लगा नहीं मुझे. His politics didn't come through them. But the video is fucking fabulous in my opinion. Just watch it. Oh, that reminds me, ये भी बहुत time लेता है ना Internet Historian. और अभी एक और बंदा वापस आया whose name is Sam Onella. Sam Onella is back. So he's put out another video. So yeah, let's. तो वो एक है. मेरे पास है, अगर 5 मिनट तो I will give everything. एक Adam something करके channel, I don't know if you guys follow. I know, damn good channel. Very good channel. He basically talks about how a lot of these
amazing looking construction projects are shit. वो Like he made दुबई a, के बारे में बात किया हाँ ना उसने। दुबई हाँ, इज अ जोक करके एक वीडियो बनाया उसने, जिस पर मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि मैं दुबई में आना जाना रहता है मेरा, and I would like it that way. हाँ, But it's a nice video, and he recently collaborated with New York Times, और New York Times के पेज पे उसका ऑफिशियल वीडियो है, which is about Elon Musk and how his hyperbole debacle, right? तो वो देखना, क्विकली बता रहा हूँ। अली आफ्ताब सईद करके एक यूट्यूब चैनल है which is basically a Pakistani guy, and his podcast reminds me of our podcast because he's been doing it for many years and he has very few listeners. And basically that's not failure we are the whatever what do Benchmark. you call benchmark from both the countries of failure in content game. तो अली आफ्ताब सईद को देखना, he is a satirist. He does satire with his songs, with his videos, with his comedy, and he is a very like low effort but a lot of effort kind of a guy. मतलब लगेगा कि बड़ा ही low effort है, but he puts in a lot of effort. He does multiple podcasts across the week. So he has 3 podcasts that, so I think he's constantly fucking churning out podcasts. एक क्रिकेट के ऊपर है, तो क्रिकेट फ्रॉम पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव अगर आपको सुनना है उसमें, लाइक अ प्रॉपर डिसेक्शन ऑफ क्रिकेट इन पाकिस्तान, और वो लोग इंडिया में भी कमेंट करते हैं, मुझे बड़ा सही लगता है क्योंकि दे आर नॉट लाइक कि हाँ इंडिया बैड, वैसा नहीं है उनका। भाई पाकिस्तान में तो उल्टा चलता है ना, वो लोग तो भाई उनके अगर तो प्लेयर्स या कमेंटेटर्स की बात सुनेगा ना इंडियन क्रिकेटर्स के बारे में, तो सब कुछ शानदार, ये इतने शानदार खिलाड़ी हैं, मतलब यू नो उनका हर चीज, मतलब देर आई डोंट नो, आई थिंक यू नो जैसे इंडिया ओवर कॉम्पेंसेट करता है ना कभी कभी अबाउट पाकिस्तान टीम का, जो मतलब फ्रॉम सर्टेन सेक्शन, सो उधर भी आई थिंक वैसा वो लोग क्रिकेट में थोड़ा सा ओवर कॉम्पेंसेट करते हैं। अपनी टीम उतनी भी खास नहीं है, हाँ एग्जैक्टली उतना अभी वो थोड़ा सा आई होप हो, बट एनीवे एक लास्ट है, लास्ट 2 फिल्म्स है बस। वन इज द बेयर, इट्स अ शो, इट्स अमेजिंग, जस्ट वॉच इट। आई सॉ द फर्स्ट एपिसोड, मैंने कल ही देखा। हाँ, यू लाइक्ड इट? आई लाइक्ड इट, दो मुझे लगा वो बहुत स्टाइल हैवी है, और मुझे वो स्टोरी काफी बेसिक सी लगी एटलीस्ट शुरुआत में, और मुझे थोड़ा वो जो टिपिकल प्लॉट पॉइंट्स जो एक शो हिट करता है, यू नो कि बहुत ही सक्सेसफुल आदमी, बहुत ही जीनियस आदमी, और उसके साथ और वो ऐसे वर्ल्ड में, बट आई डोंट नो, आई हैव ओनली सीन द फर्स्ट एपिसोड, बहुत सो आई कुड बी रॉन्ग। वो है, बट इट इज डिसेप्टिवली कॉम्प्लेक्स बाय द एंड ऑफ इट। तो वो धीमे धीमे इट विल क्रीप अप ऑन यू, इन माय ओपिनियन, जो मेरे साथ भी हुआ था। फर्स्ट एपिसोड में मुझे लगा हाँ यार ठीक है, मतलब आई एम वाचिंग इट बिकॉज़ अ लॉट ऑफ पीपल हैव रिकमेंडेड इट। करेक्ट। दूसरा, अभी मैंने आज एक मूवी देखी, डिसीजन टू लीव, व्हिच इज बाय माय वन ऑफ माय फेवरेट डायरेक्टर्स, पार्क चैन, एंड बहुत ही सही। यू सॉ इट, कहाँ देखा तूने? मतलब यार मिल गया अच्छी यार क्वालिटी में? मूवी पे था इंडिया में, लेकिन अभी मैं मूवी पे गया तो नहीं था, तो फिर मैंने अलग जगह पे देखा, अच्छी क्वालिटी में, मस्त एकदम, सबटाइटल चूतिया थे बट ठीक है, वो देख लेना, बहुत सही मूवी है। इट्स अ प्रॉपर, यार उस पे करते हैं ना, डिसीजन टू लीव देखते हैं यू नो, और बात करते हैं, कर सकते हैं। आई हैव वॉच्ड इट एंड इट्स लाइक आई कैन टॉक अबाउट इट एंडलेसली। इट्स अ वेरी, आई विल आल्सो ट्राई टू वॉच इट। ठीक है, इट्स अ डैम फन फिल्म। चलो ओके, दैट्स इट। चलो कूल, बाय गाइस।